Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome to the channel The Twins Academy. Today we will discuss the topical MCQ related with the transfer of heat, and we know that there are three methods of transfer of heat: conduction, convection and radiation. तो आज जिस टॉपिक के MCQs हम डिस्कस करेंगे that is conduction and convection. We know that conduction takes place in solid, and what happened in transfer of heat during conduction in solids, atoms क्या करते हैं, they vibrate about their mean positions, collide with each other, और energy क्या करते हैं, they transfer energy. While there is one important part of conduction of heat in solid, that in metals, metal में क्या exist करते हैं, free electrons, and due to the movement of the free electrons, energy बड़ी quickly क्या होती है, transfer होती है in solids from one place to another place, or from one end of the solid to another end of the solid. So conduction is basically related with solids. So let's start to solve the questions. Question number 1. A silver cup is filled with boiling water from a kettle. A man touches the outside surface of the cup and finds it extremely hot. Why is the surface so hot? Now just we will concentrate on this word silver. Silver क्या चीज है? Silver is a metal, and we know that in metal heat is being transferred due to the motion of free electrons. Okay, now just look at the options one by one. Convection takes place in the boiling water. Okay, surface hot, no, it is not linked with this. The boiling water gives out latent heat, no, it is not linked with this. The shiny surface is good emitter of infrared radiation, no, it is not linked with this. Linked with this means क्या मतलब? Silver cup. Silver is a metal, and we know that metals में क्या exist करते हैं, free electrons, and due to the existence of free electrons, metals are considered as good conductors. So which option is correct? Option B. Silver is a good conductor of heat, due to which it becomes extremely hot as soon इसको क्या provide करते हैं, heat. Okay जी. Question number 2. Which statement about copper explain why it is better conductor of heat than glass? Okay, now copper and glass. Copper क्या चीज है जी? Copper is a conductor, while glass क्या है? Glass is an insulator. So we know that conductor में क्या चीज exist करती है? Free electrons, while insulator में there are no free electrons. Okay, now look at the options one by one. Atom vibration is passed on neighboring copper atoms quickly. इसमें क्या है? Much better conduction. So this is not linked with the property or definition of conductors or reason of flow of heat in conductor. Okay ji. Atoms move through the copper and passes on kinetic energy. No, it is not correct. There are density changes. Density changes is related with convection. So there are free electrons in copper. Yes, copper is a good conductor of heat. Why? Because copper is a metal, and what exists in metal? Free electrons. So which option is correct? Option D is the correct answer. Number 3. 4 beakers containing the same amount of water at the same temperature. Okay, अब इसमें क्या चीज गिवन है? Same amount of water, same temperature are placed at hot metal plates. The lower surface of metal plates are kept at the same temperature. Okay, lower surface of metal plate. The metal plates are of the same size but are made of different metals. So 4 different metals की ये metal plates बनी है. The metal plates, the times taken to produce stated temperature rises are given below. Which metal is the poorest conductor? Okay,
टेम्परेचर गिवन 10, 12, 15, 18 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे टाइम कितना गिवन है 100, 100, 200 एंड 200 सेकेंड्स. नाउ व्हाट वी विल डू, इसमें हम टाइम के विद रिस्पेक्ट टू इसमें चेंज कैलकुलेट कर लेंगे फॉर ईच ऑप्शन. सो फर्स्ट वन के लिए when we will calculate 10 over 100, so then it will be 0.1. second one के लिए 12 divided by 100, 0.12. थर्ड वन के लिए 15 divided by 200. so per second हमने उसकी वो चेंज कैलकुलेट कर ली, तो दिस विल बी 0.075. और फोर्थ वन के लिए 18 divided by 200, then this was equal to 0.09. so which option is correct, which is the minimum value 0.075. so कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन सी. नंबर 4, how heat is conducted in metals. metals are good conductors and good conductor carries. क्या चीज कैरी करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस सॉलिड में movement of the or transfer of energy is being done due to vibrations of atoms as well. So these are the two particular parts. So by movement of free electrons through the metal only, no. By movement of atoms through the metal only, no. By vibrations of atom and movement of electrons through the metal, yes. And by vibration of atoms only, no. So which option is correct? Option C. So in metal, heat is being transferred किसकी वजह से, by vibrations of atom, ये चीज कंपल्सरी लिखनी है, and movement of free electrons through the metal. Number 5, a saucepan is used to heat up some water. Okay, how heat is transferred through the aluminum pan and through the plastic handle. Plastic is an insulator. Okay, so hot metal, aluminum, it's a conductor. And what exists in conductor? Free electrons. So through aluminum pan, movement of free electrons and vibration of atoms, okay. Movement of free electrons and vibrations of atoms, okay. Movement of free electrons only, no. Movement of free electrons only, no. Okay. Heat is transferred through plastic handle. Okay. Vibration of molecules, yes, it can be correct, but it's wrong. So option D is not there. By movement of free electrons, there are no free electrons, so it's wrong. Free electrons, it's wrong. Vibration of molecules, yes. So which option is correct? Option B is the correct answer. Okay, the next question. Question number 6. A solid bar is heated at one end. Okay. How thermal energy is transferred to the other end of the bar? Again, what we will find, vibration of atoms, molecules and free electrons. So just look there. Heated molecules move along the bar carrying energy to another end. No. Conduction में तो molecules move नहीं करते, they just vibrate. Again, heated molecules move, no, they just vibrate. So option A and B are wrong. Heated molecules stay completely still, no, कभी भी still नहीं रहते, they vibrate or they move. Heated molecules vibrate more rapidly and passes on energy to molecules, yes. तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कन्वेक्शन, वी नो दैट, हमें पता है कन्वेक्शन की वजह से नंबर 1 क्या होता है, जब भी हीट प्रोवाइड करते हैं लिक्विड और गैस को, नंबर 1 लिक्विड और गैस एक्सपेंड्स, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी बिकम्स लेसर, पार्टिकल बिकम्स लाइटर, rises up and convection currents are produced. ये कौन सा प्रोसेस है, हीटिंग.
कूलिंग के लिए इसका रिवर्स होगा. कूलिंग में what will happen? Density becomes more, particle becomes heavier, and हीटिंग में क्या था, राइजेस अप, और इसमें क्या होगा, मूव्स डाउन और सिंक्स डाउन. सो ये पॉइंट आपने याद रखने फॉर कूलिंग एंड फॉर हीटिंग. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. द डायग्राम शोज अ मेटल सॉसपैन containing water and placed on a hot plate. Okay, after some time the air at the point X becomes hot. Okay, what are the main ways by which heat travels from hot plate? Hot plate is made of metal. Through the base of the metal saucepan, through the water, through the air. Okay, अब तीन चीजें पूछी हैं जी. Through saucepan, base of the saucepan, through water, through air. We know that convection occurs in fluids, और फ्लूइड्स में हमारे पास दोनों चीजें आ जाती हैं, लिक्विड एंड गैस. बेस, बेस इज मेड ऑफ प्लेट एंड प्लेट इज सॉलिड, so it's mean इसमें कंडक्शन एंड कंडक्शन. सो नाउ टू ऑप्शंस आर क्रॉस्ड. ऑप्शन ए करेक्ट हो सकती है, ऑप्शन बी. ओके, वाटर इज अ फ्लूइड. फ्लूइड में हीट ट्रांसफर होती है ड्यू टू कन्वेक्शन नॉट रेडिएशन, और एयर में भी हीट ट्रांसफर होती है ड्यू टू कन्वेक्शन. सो सिंस दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, so ऑप्शन बी. एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए. तो सॉलिड में कंडक्शन, वाटर में कन्वेक्शन, एयर में भी कन्वेक्शन. ओके, एन एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट एज शोन. टेस्ट ट्यूब, देयर इज अ मेटल गॉज जिसने आइस क्यूब को क्या करके रखा हुआ है, होल्ड ऑन बॉइलिंग वाटर ड्यू टू दिस हीटिंग पॉइंट, स्टीम and glass test tube. Why does the ice take long time to melt even though water at the top of the test tube is boiling? Okay, since it is boiling upwards, so convection current will take place like this. So convection cannot occur in water. Convection होती ही liquid में, so it's wrong. Ice is a poor radiator of heat. Wrong. The metal gauze prevents energy reaching the ice. No. Metal gauze तो वो किस चीज का बना है, metal का, so it can passes the heat. But what is the best option? Water is a poor conductor of heat because heat किसके through transfer हो रही है, through water, so it will transfer very slowly. So which option is correct? Option D, since water is a poor conductor of heat. Instead of question number 5, I will explain question number 4. Rather, I think question number 5 is best to explain because 5 में diagram is more clear than 4. Questions दोनों same है. A teacher has large tank of water in which he wants to set up convection currents. Okay, which of the following arrangement would do this? इसके लिए हीटिंग के लिए हमारे पास क्या होता है, हीटिंग पॉइंट से जब भी हम हीट अप करते हैं तो कन्वेक्शन करंट्स विल टेक प्लेस अपवर्ड द हीटिंग पॉइंट, और कूलिंग में क्या होता है, कन्वेक्शन करंट्स टेक्स प्लेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब इसमें देखेंगे कि कौन सी ऑप्शंस करेक्ट है. हीटिंग एट जी, जब जी को हीट अप करेंगे, हीटिंग एट पॉइंट जी, तो इट विल मूव अपवर्ड, और ऊपर कोई चीज अवेलेबल नहीं है, सो ऑप्शन डी इज नॉट पॉसिबल. अच्छा जी, हीटिंग एट वाई, सेम इज दिस, इट विल मूव अपवर्ड, बट ऊपर तो कोई भी चीज नहीं. हमने कन्वेक्शन कहां पे प्रोड्यूस करनी, इन वाटर नॉट इन एयर. कूलिंग एट एक्स, एक्स बिल्कुल बेस के साथ टच है तो ये नीचे नहीं जाएगा, सो नथिंग विल हैपन. सो नाउ कूलिंग एट वाई, अब कैसे होगा, जब वाई को कूल डाउन करेंगे इट विल मूव लाइक दिस. So in this way convection currents will be set up.
The diagram shows a room seen from above. It is cold outside the room. The room is heated by a small fire in the fireplace. Okay जी, door, solid wall, glass window, fireplace, chimney, carpet. तो सारी चीजें given है. Where is the most heat lost by convection? Glass window solid, door solid, carpet solid. अब fireplace, chimney escape. तो इट्स मीन escape का मतलब है कि यहाँ पे क्या चीज अवेलेबल है for wastage of gases. तो यहाँ पे अवेलेबल है कन्वेक्शन करंट के लिए प्लेस. फायर प्लेस हीट अप करेंगे, हीट अप करने से जो एयर अबव है वो क्या होती जाएगी, यहाँ से थ्रू चिमनी स्केप होती जाएगी. सो हीट विल बी लॉस्ट थ्रू चिमनी. कारपेट क्या है, सॉलिड. ग्लास विंडो क्या है, सॉलिड. और सॉलिड वर्ल्ड ऑलरेडी ही क्या चीज थी, सॉलिड. सो थ्रू चिमनी हीट विल बी लॉस्ट बाय कन्वेक्शन. Number 7. The heat from hot water in metal radiator passes through a metal and then spreads out the room. Okay. What are the main processes by which heat is transferred by the radiator? Now radiator is made of metal, solid, and then spread around the room. Okay. Radiator solid. Conduction, conduction, radiation, radiation cancelled. So option C and D gone. Around the room. Room में क्या exist करती है, air. So air में कौन सा process होगा, convection. So conduction. This option gone. So which option is correct? Option B is the correct answer. So logic के साथ आप इसको solve करोगे. Okay जी. A double glazed window has two sheets of glass separated by a layer of air. Okay. So like this, window 1, window 2, and what exists between these two windows? Layer of air. Thermal energy is conducted and convected through the layer of air. Okay. The amount of conduction and convection varies with the thickness of layer of air. Okay, ये आप इसमें ग्राफ ड्रॉ कर दिए. Which thickness of air produces smallest energy transfer and why? Okay, so now we will see कि कहाँ पे ये दोनों lines minimally intersect करती है at this point. So what is the thickness of layer of air at this point? जहाँ पे दोनों by convection and by conduction, इन दोनों के लिए इसने combine पूछा है. So straight में 1 सेंटीमीटर की एक ही ऑप्शन गिवन है, 1 सेंटीमीटर, बिकॉज द थर्मल एनर्जी ट्रांसफर इज लीस्ट. यू कैन सी कि अगर यहाँ पे हम वाई एक्सिस में हैं तो दिस इज द रेट ऑफ, और दिस इज द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी. सो ऑब्वियसली इस जगह पे हीट एनर्जी की वैल्यू कम होगी, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे उससे भी ज्यादा. सो एट 1 बिकॉज thermal energy is least. So option B is the correct answer. Again the same question which we have already done. उसी तरह का ये जैसे पहले किया था. हीटर कहाँ पे प्लेस्ड है, upward. Water at the top of the hot water tank is heated and water becomes hot. No water enters or leaves the tank. Okay जी, बात ही खत्म कर दी. Water at the bottom of tank stays cold for some time. It was just like the same. दिस वाज द वाइट गॉस, और यहाँ पे इसको क्या ट्रैप किया था, आइस क्यूब को. तो क्वेश्चन क्या था कि क्यों जो है वो बड़ी देर बाद जो है वो मेल्ट होगा. तो रीजन क्या थी, वाटर वाज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. दिस इज द रीजन इट विल टेक लिटिल मोर टाइम दैट ऑल ऑफ द वाटर इज गोइंग टू बी हीटेड अप. और इसका बेस्ट मेथड क्या है कि अगर वाटर को क्विकली हीट अप करना है तो फिर हीटर शुड बी प्लेस्ड एट always lower end of the water tank. और कभी गीजर्स देखें, गीजर्स में कहां पे होता है इसका बर्नर, ऑलवेज एट द बॉटम ऑफ द वाटर टैंक. ओके, नाउ दिस इज related with cooling. What happened in cooling? Density increases, particles heavier and then sinks. So when a refrigerator is switched on for the first time, the air surrounding the air box is cooled. Okay,
Ice box is cooled. Okay. What happens to the density of the air and to its position inside the refrigerator? Okay. Now air is being cooled near the ice box. What happened to the air? Density becomes more, A and B crossed, and sinks to the bottom, stays at the top, not possible. So which option is correct? Option C is the correct answer. Number 11. An electrical heater is placed in a beaker of a cold oil. Okay. The heater is switched on. What happens to the liquid at X? Liquid. Okay. Convection. Density less, lighter, rise up. Okay. Becomes less dense and falls. No. More dense. No. More dense. No. It becomes less dense and rises. So which option is correct? Option B is the correct answer. Again, wow. Air near the cooling unit, same more or less. क्या होगा? Cooling unit, density increases, particles heavier, sinks and contract. हीटिंग में क्या होता था? पार्ट गैस या लिक्विड क्या करती थी? एक्सपैंड. मॉलिक्यूल्स क्या करते थे? फार अपार्ट. हीटिंग में. और कूलिंग में क्या होगा? एक्सपैंड की जगह पे लिक्विड और गैस क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट. मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स क्या होंगे? दे विल कम नियर टू ईच अदर. सो पहले डेंसिटी देखते हैं. डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस. नो. डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस. नो. so option C and A cancelled out. Density of air increases. Yes, density of air increases. Now becomes smaller. Particles का साइज कभी चेंज नहीं होता. मॉलिक्यूल्स का साइज कभी चेंज नहीं होता. सो ऑप्शन बी इज नॉट पॉसिबल. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. चले जी, लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. इन विच स्टेट्स ऑफ मैटर डज कन्वेक्शन अकर्स? सॉलिड्स? नो. सॉलिड्स? नो. सॉलिड्स? नो. Which is the best answer? Option B. It occurs in gases and liquids. Okay ji, stay blessed. Best of luck. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.